Hello, everyone. We'll begin shortly. We request you to settle down and be quiet. Thank you for your patience. Here is a reminder for what we must learn from our martyrs today. The art of dying with smiles on our faces and the art of living with the courage to court trouble. During their trial for throwing bombs in the Central Assembly, Shaheed Bhagat Singh and his comrades had already decided that they will not escape, that they will not deny the charges. They proclaimed, "We then deliberately offered ourselves to bear the penalty for what we had done and to let the imperialist exploiters know that by crushing individuals, they cannot kill ideas. By crushing two insignificant units, a nation cannot be crushed." Good morning, everyone. I'm Gaurav Kumar, faculty member, Department of English, Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi. And I'm joined today by my colleague, Ms. Ritham Gupta from Department of English. We welcome you to Shaheedi Diwas 2024. We are gathered today to remember and cherish the sacrifice and ideals of Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, the revolutionary patriot who has given our college a name as well as a moral vision to live by. Every year on March 23rd, our college and our country marks Martyrs' Day or Shaheedi Diwas to honor the brave soldiers who gave their lives to the nation. Communist philosopher Soren Kierkegaard becomes apt. Kierkegaard said, "The tyrant dies and his rule is over. The martyr dies and his rule begins." In fact, Bhagat Singh himself has been quoted to have said the following: "Bhagat Singh dead will be more dangerous to the British enslavers than Bhagat Singh alive. After I am hanged, the fragrance of my revolutionary ideas will permeate the atmosphere of this beautiful land of ours. It will intoxicate the youth and make him mad for freedom and for revolution. And that will bring the doom of the British imperialists nearer. This is my firm conviction." We are privileged today to have among us esteemed guests, distinguished faculty, staff members, and several young noble minds as we recall the cause and sacrifice that Shaheed-e-Azam Bhagat Singh and his fellow revolutionaries represented. I would now request our Honorable Principal Sir, esteemed guests, and senior teachers to join in as we commence with the lamp lighting ceremony and Saraswati Vandana by audiophile, the Music Society of our college. So please come and join us. Please come. I request Principal Sir, esteemed guests, and senior teachers to join in as we commence with the lamp lighting ceremony and Saraswati Vandana by audiophile, the Music Society of our college. Saraswati
नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा Thank you, everyone. I now invite you to experience the documentary Marte Nahi Bhagat Singh by the Knowledge Dissemination Center of Shaheed Bhagat Singh College. मेरे हंसते हंसते फांसी चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह होने की उम्मीद करेंगी। इससे आजादी के लिए कुर्बान देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लाखों करोड़ों लोग तमाम उम्र गुजार देते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद भी समझ नहीं पाते। जवान अपनी जिंदगी और मौत दोनों को मुकम्मल कर गया। जी हाँ, सरदार भगत सिंह नाम था उस रण बांकुरे का जिसमें मेरे हंसते हंसते फांसी चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह होने की उम्मीद करेंगे। इससे आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लाखों करोड़ों लोग तमाम उम्र गुजार देते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद भी समझ। We apologize for the inconvenience. भारत का एक शहीद सपूत महज 23 साल की उम्र में अपनी मौत के मकसद के बारे में Keeping alive the ethos of our warriors, जिस उम्र में let us prepare ourselves प्यार के अफसाने एक कैफियत में आपको मुतला किए रहते हैं। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में वक्त गुजरते हैं।
उस उम्र में एक नौजवान अपनी जिंदगी मुकम्मल मेरे हंसते हंसते फांसी चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह होने की उम्मीद करेंगी। इससे आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लाखों करोड़ों लोग तमाम उम्र गुजार देते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद भी समझ नहीं पाते। भारत का एक शहीद सपूत महज 23 साल की उम्र में अपनी मौत के मकसद के बारे में भी इतनी साफ समझ रखता था। जिस उम्र में जवानी हिलोरे ली है, प्यार के अफसाने एक कैफियत में आपको मुब्तला किए रहते हैं, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में वक्त जाया किया करते हैं, उस उम्र में एक नौजवान अपनी जिंदगी और मौत दोनों को मुकम्मल कर गया। जी हाँ, सरदार भगत सिंह नाम था उस रंग बांकुरे का जिसने वतन की इबादत के रास्ते में फांसी के फंदे को चूमकर गले में पहन लिया। भगत सिंह इतनी कम उम्र में क्रांति की इतनी गहरी समझ रखते थे कि उन्होंने इंकलाब के लिए अपनी शहादत का रास्ता चुना। वो जानते थे कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, बल्कि हजारों नौजवानों के लिए एक नसीर बन जाएगी और क्रांति की जमीन तैयार करेगी। इसीलिए वो लिखते हैं, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। जिन्होंने विचार को श्रेष्ठ कहा और एक ऐसी मौत को ही मुकम्मल माना जो इनकलाब बर्पा कर दे। यूं तो हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले आजादी के परवाने हमारे देश में कभी कम ना थे, लेकिन विचारों की मजबूती और ऐसी साफ गोई भगत सिंह को सबसे अलग उस ध्रुव तारे के मानंद बना देती है जो आसमान में अपना अलग किरदार निभाता है। मौत किसी के लिए इतनी बेनियाज हो सकती है, इस बात को सोचकर ही अद्भुत रोमांच का अनुभव होता है। मौत के लिए भगत सिंह की बेफिक्री का अंदाजा एक वाकये से लगा सकते हैं। जब भगत सिंह को फांसी दिया जाना तय हो गया तो उनकी मां विद्यावती कौर उनसे मिलने जेल पहुंची। लाजमी था कि जो सैलाब उनके अंदर था वो आंसुओं के जरिए बह निकला। तब भगत सिंह ने अपनी मां से जो कहा वो तारीख का फिक्रा भले ना हो, लेकिन बेफिक्री का एक अव्वल उदाहरण है। बेटे, तू ते इंज रो रही जिन्हें मैंने आया लाने लगे। पंजाब के लायलपुर जिले के एक गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। मौजूदा वक्त में भगत सिंह का ये गांव पाकिस्तान की ऐतिहासिक धरोहर है। भगत सिंह और आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमने वाले उनके जैसे वीर सपूतों की रूहों को शायद ही कभी यकीन आए कि जिस देश की आजादी के लिए वो लड़े थे, अब वो अलग अलग सरहदों में बढ़ चुका है। भगत सिंह ने अपनी कम उम्र के सफर में न सिर्फ शहादत से आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल कायम की, बल्कि अपने विचारों से एक ऐसी लहर पैदा की जो हर वक्त में प्रासंगिक बनी रहेगी। ये नौजवान न सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात किया करता था, बल्कि विचार की आजादी को भी असली आजादी मानता था। भगत सिंह का क्रांति का विचार किसी एक विदेशी सरकार या नियंत्रण से मुक्ति पाने तक सीमित नहीं था। उनका विचार किसी भी तरह के साम्राज्यवाद का विरोध करता है। भगत सिंह मूल रूप से ये मानते थे कि साम्राज्यवाद में ही तमाम वो कारण मौजूद हैं जिनसे दुनिया में असमानता और अत्याचार का बोलबाला है।
आजादी के लिए चुने गए भगत सिंह और उनके साथियों के क्रांतिकारी रास्ते से महात्मा गांधी भले ही इत्तेफाक नहीं रखते थे, किंतु उनके जज्बे को सभी सलाम करते थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के अंदाज ने नौजवानों में जिस तरह देश के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगाने की प्रेरणा पैदा की, उससे अंग्रेजी हुकूमत का हौसला कमजोर हुआ। इस महान शहादत के बाद आजादी मिलने तक 100 से ज्यादा नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी। क्रांति की राह में कुर्बान होने वालों की इसी शिद्दत का अंजाम था कि अंग्रेज हुकूमत स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं से बराबरी के स्तर पर बातचीत करने लगी थी। कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी और उनके योगदान को खारिज किए जाने के बावजूद भगत सिंह को अपने विचारों की शुद्धता और कामयाबी पर पूरा भरोसा था। इन पंक्तियों से ये साफ पता चलता है कि अपने विचार की ताकत पर वो कितना फख्र किया करते थे। उसे ये फिक्र है हरदम, नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। घड़ी भर का मेहमा हूँ अहले महफिल में, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, फलक में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्के खाक है फानी रहे ना रहे। भगत सिंह एक मुक्त ख्याल के नौजवान थे और किसी भी तरह की चुनौती को स्वीकार करने में यकीन रखते थे। लाहौर विधानसभा में बम फेंकने की जब योजना बनी तो शुरुआती दौर में उस टोली में उनका नाम तय नहीं था। क्रांतिकारी दल का मानना था कि क्रांति की लंबी लड़ाई में भगत सिंह की आवश्यकता है, लेकिन भगत सिंह ने क्रांतिकारी दल की बैठक में जोर देकर इस योजना में अपना नाम जुड़वाया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जिंदादिली और आजादी का जज्बा देखकर जेल के अधिकारी कर्मचारी भी उनके मुरीद हो गए। भगत सिंह वर्तमान में यकीन रखते थे और मानते थे कि लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बस बिना देर किए उसे हासिल करने की कोशिश शुरू करनी चाहिए। वो कहते हैं, चरख का क्या किला करें, ये सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कर्म की ऐसी प्रेरणा जहां मुकाबला करना अहम है, आप कामयाब हुए न हुए ये मायने रखता ही नहीं, आपकी कोशिश मायने रखती है। ख्याल की आजादी को इतनी तवज्जो देने वाले भगत सिंह का इस देश पर कर्ज है और उसे चुकाने की हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश की आजादी को संभालने, संवारने और भगत सिंह जैसे मानवीय मूल्यों को हासिल करने तक भगत सिंह और उनके जैसे वीर सपूतों का कर्ज हम पर उधार रहेगा। इस शहादत पर हमें गर्व की सही अभिव्यक्ति हमारे कर्म से ही हो सकती है। भगत सिंह अपने विचार को, अपने ख्याल को अपनी जिंदगी से अहम मानते थे। जिस विचार के लिए इस आजादी के दीवाने ने हंसकर मौत को गले लगा लिया, उसको हम सभी का सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। Thank you, Principal Sir, for the last minute save. The documentary has definitely left an indelible mark on all our souls. Keeping alive the ethos of our warriors, let us prepare ourselves for an oral treat and welcome audiophile for a performance. Let us welcome them with a round of applause, please. Hello everyone, we are from Audio for our Society.
Shaheed Bhagat Singh College, and we are really honored to that we got this opportunity to perform on this occasion. This performance is dedicated to our real heroes of our country, like Shaheed Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru, whom made. Hello. This performance is dedicated to real heroes like Shaheed Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev, who protected our country and fought for our country and sacrificed their lives so that we could live in peace and harmony. Hope you all enjoyed. Thank you.
सबसे प्यारी मेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार की मां तुझे सलाम मां तुझे सलाम मां तुझे सलाम मां तुझे सलाम Thank you, audiophile, for that immensely heartfelt performance. I request the audience to stand as we take pride in the rich heritage of our university through the Delhi University Kulgeet. जय 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 ज्ञान का लोक सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश के स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन निष्ठा धृति सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे नित्य छात्र और छात्राएं दीक्षित सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का लोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम Thank you for joining in this moment of musical tribute to our university. I now invite our esteemed guests to take their seats on the dais. We once again welcome our esteemed guests. Thank you, everyone. I consider myself extremely fortunate to have the opportunity to introduce our chief guest for today's hallowed gathering, Lieutenant General Retired Vishnukant Chaturvedi, PVSM, AVSM, SM. Lieutenant General V.K. Chaturvedi is an alumnus of National Defense Academy and Indian Military Academy. He has fought the 1971 Indo-Pak War, held commanding positions for various operations, and successfully held various assignments, including GSO-2 at Military Operations Directorate, Colonel Administration of a Division in the Deserts, Director at Weapons and Equipment Directorate in Army Headquarters, Brigadier Administration of the then largest corps of the Army in J&K, and Additional Director General, Operation and Training of Artillery. Lieutenant General V.K. Chaturvedi was awarded the Param Vishisht Seva Medal in 2011 for distinguished services of the highest order by the President of India.
the Ati Vishist Seva Medal for Distinguished Services of Exceptional Order by the President of India in 2007, and the Sena Medal for Gallantry during the 1971 war. Lieutenant General Chaturvedi is also a virtuoso in academics, as is evident by the various degrees that he holds. The officer holds a Master of Philosophy from Madras University in Strategic Studies and International Affairs, Master of Science from Madras University in Defense Studies, Master of Management Studies from Osmania University, along with a postgraduate diploma in Business Management from Pune University. Post-retirement, our honorable chief guest has been busy with various engagements in a wide variety of fields. Presently, the officer is a consultant in defense matters and guest lecturer at several premium institutions like the Indian Institute of Science, Delhi University, South Asia Studies Center, JNU, and Antarashtriya Sahyog Parishad. He has also handled the 6th CPC and been responsible for initiating a number of initiatives for the welfare of all ranks. We welcome you, sir, and thank you for your benign and esteemed presence here today. जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. In the spirit of these lines by our national poet Maithili Sharan Gupt, it's my privilege to welcome our guest of honor for the day, Air Commodore, retired, Shri Kartike Kale, AVSM. Born in Mumbai, Shri Kale completed his schooling in Delhi in 1984 and graduated from Ramjas College, University of Delhi in 1987 with a degree in political science. He joined the Air Wing NCC in 1984. Along with being chosen the best cadet, Delhi Air Wing, he also won the All India Best Cadet Air Wing NCC in 1985. He was selected for the Indo-Canada Youth Exchange Program 1986 and has been awarded scholarships from the University of Delhi and the Delhi State. Air Commodore Kale was commissioned in the Indian Air Force in 1988 in the fighter stream. Among the aircrafts flown by him are MiG-23BN, Jaguar, and Pipistrel Virus Microlight. A few of the significant appointments held by him in the IAF are senior instructor for MiG-27 and Jaguar, Tactics and Air Combat Development Establishment at the IAF Top Gun School, and Director, Tactical Operations at Air Headquarters. He was also the military assistant to Commander-in-Chief, Strategic Forces Command, Director, Airborne Sensors and Networks, and Principal Director, Aerospace Safety at the Air Headquarters. Air Commodore Kale was awarded the Chief of Air Staff Commendation in 1993 and AOC in Sea Commendation in 2002, 2014, and 2016. The officer was awarded the Presidential Award of Ati Vishisht Seva Medal in 2018 and nominated as a team leader for Indo-Russia Air Exercise Arya Indra 2019. Thank you, sir, for gracing the occasion with your presence. It's truly a delight to have you here today. शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा. As we celebrate the 93rd death anniversary of our national heroes, let us remember them with hearts full of gratitude. Now, it's my pleasure to introduce the guest of honor for the day, Colonel Samir Bakshi. Colonel Bakshi is the commanding officer of 4 Delhi Battalion NCC. He belongs to 2 Para Special Forces Regiment and has also done an attachment with Rashtriya Rifle. We're pleased to have you with us on this august occasion, sir. Before we continue with our proceedings, here's a quick announcement. For those faculty members who can't find any vacant spaces in this room, we also have C1 and C3. We can use those rooms as well. Thank you. I now request our Honorable Principal Sir, Professor Arun Kumar Atri, Staff Council Secretary, Dr. Varinder Kumar, and Function Committee Convener, Dr. Neha Nanwal,
to felicitate our esteemed chief guest with a bust of Bhagat Singh and a planter as tokens of our appreciation. Thank you. I now request our respected Principal Sir, Dr. Amrita Bajaj, President, Staff Association, and Dr. Rajiv Kumar Upadhyay, Coordinator, Function Committee, to felicitate our esteemed guest of honor, Air Commodore Shri Karthike Kale, with a planter and a bust of Shaheed Bhagat Singh. Thank you. I now request our esteemed Principal Sir, Dr. Neha Nenwal, Convener, Function Committee, and Dr. Rajiv Kumar Upadhyay, Coordinator, Function Committee, to felicitate our esteemed guest of honor, Colonel Sameer Bakshi, with a planter and a bust of Shaheed Bhagat Singh. I would now like to request the address by the one gentleman who has truly embodied the sacrificial and revolutionary ideals of Shaheed Bhagat Singh in his personal and administrative capacities by staking everything to initiate for this college the radical change that Bhagat Singh represented and championed. That is, I request our Honorable Principal, Professor Arun Kumar Attri, to address the gathering. आज के गण्यमान्य अतिथि श्री विष्णुकांत चतुर्वेदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल, श्री कार्तिकेय काले जी, एयर कमोडोर, एंड कर्नल समीर बख्शी जी, साथ ही मेरे मॉर्निंग कॉलेज के शिक्षकगण और विद्यार्थी, आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन माना जाता है जब हम शहीद भगत सिंह कॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि आज के दिन भारत के 3 सपूत सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों ने अपनी इस देश के लिए शहादत दी। काफी लोग जानते होंगे इस बात को कि ब्रिटिश सरकार ने 24 मार्च का दिन मुकर्रर किया था तीनों को फांसी देने के लिए, लेकिन एक दिन पहले उनको फांसी दे दी गई ताकि कानून व्यवस्था खराब ना हो। उनको डर था कि अगर लोगों को पता चला कि 24 मार्च को फांसी दी जा रही है तो शायद फांसी हो ही ना और जन सैलाब उमड़ पड़े। ऐसा व्यक्ति कैसे कोई ऐसा हो सकता है कि 23 साल की उम्र में इतनी क्रांति ले आए? आज के समय में आप देखिए कितना सोशल मीडिया है, कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, और हम बात कर रहे हैं 1931 की, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। एक ट्रिब्यून अखबार था जो कि ये खबरें छापता था और उस अखबार की खबरों को सभाओं में पढ़ा जाता था।
उससे लोगों को पता चलता था। लेकिन एक बात जरूर तय है कि वहां के लोग जागृत थे, उस टाइम के समय के जो लोग थे वो जागृत बहुत थे। आज तो मुश्किल हो जाता है लोगों को इकट्ठा करना सुनाने के लिए भी। हम इतने बिजी हो चुके हैं अपने बिजी शेड्यूल में, अपने नॉर्मल शेड्यूल में, कि हमें लगता है कि 2 घंटे निकालना ही बड़ा मुश्किल है। और कोई अपनी जिंदगी दे गया इस देश के लिए, हंसते हंसते चढ़ गए। तो मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब का, कि जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी। उस टाइम तो सर हम पैदा भी नहीं हुए थे, काफी लोग नहीं हुए। तो आप लोगों का इस देश में जो कंट्रीब्यूशन है पूरी भारतीय सेना का, मैं तीनों भारतीय सेनाओं की बात कर रहा हूं, वो लोग, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम सिर्फ फिल्म देखते हैं 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, और तालियां बजा के निकल जाते हैं। लेकिन वो लोग, वो तो असली में ये रोज जीते हैं, कैसे अपने हमारे सरहदों को बचा के रखते हैं दुश्मन देश से। सियाचिन पे आप सोच नहीं सकते, कई लोगों के लिए तो एक्सकर्शन होता है लद्दाख में चले जाना। मैं एक बार गया लद्दाख में, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, 18,380 फीट की वो खरदुंगला, जिसको ला मतलब पास। तो खरदुंगला से जब पास होकर निकलते हैं तो लगता है बस 3 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है वहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मेरी भी तबीयत खराब हो गई। लेकिन जब मैं निकल रहा था वहां से तो मैंने देखा कि वहाँ इतने सारे फौजी हैं, वो तो रोज ही वहीं पे रहते हैं। तो मैंने कहा इनको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती क्या? बोले नहीं, ये तो लोगों को सपोर्ट देते हैं। आर्मी वो काम भी करती है, आप देखो कि जब भी ऐसी क्राइसिस हो जाता है, बाढ़ आ जाए, ना संभल रहा हो सरकार से, आर्मी बुला ली जाती है। कहीं भूकंप आ जाए, ना संभल रहा हो, स्थिति ना काबू में आ रही हो, डिजास्टर मैनेजमेंट तो अब बना ना, उससे पहले तो आर्मी देखती थी। तो आर्मी का योगदान हमारे देश में बहुत ही अतुल्य है। और शहीद भगत सिंह की जब हम बात करते हैं तो देखिए, मेरे लिए तो ये विषय बड़ा, और भगत सिंह जो है वो बड़े अजीज है। मैं अपने आप को बड़ा कनेक्ट कर पाता हूं जब मुझे तारीख याद है, वो 28 जनवरी 2011, जब मैं इस कॉलेज में मैंने पहली बार कदम रखा था इंटरव्यू देने के लिए। तो वो भगत सिंह की प्रतिमा जो है, आज सर भी बोल रहे थे कि ये बड़ी जीवंत प्रतिमा है, ऐसा लगता है अभी बोलेंगे। तो मुझे लगा था उस टाइम कि हाँ, ये कुछ बोलने वाले हैं, कुछ कह रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने मन मन में हाथ जोड़े और बोला कि मुझे अगर मौका मिला आपकी सेवा करने का तो मैं जरूर करूंगा। पर ये नहीं सोचा था कि प्रिंसिपल बन के करूंगा, सोचा था जैसे भी टीचर भी बना तो मैं करूंगा, और वो मैं करता रहा। और ये ईश्वर का या भगत सिंह जी का आशीर्वाद ही कहेंगे कि मैं जो चाहता हूं वो कर पाता हूं। ये शक्ति जो है लोगों के, अपने शिक्षक साथियों के सपोर्ट से आती है, स्टूडेंट्स के प्यार से आती है। और मैं आप लोगों से भी आशा करता हूं कि हम अपने ऐसे विचार लाएं। आज हमने ये देखा, जो महेश चौधरी जी ने ज्ञान प्रसार केंद्र की तरफ से ये बनाया है कॉलेज का, ये थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना जगाता है। तो हम चाहेंगे कि ऐसा एक लाइब्रेरी जब रिनोवेट हो रही है तो लाइब्रेरी के अंदर एक इस तरह का जैसे म्यूजियम बनता है छोटा सा शहीद भगत सिंह जी का, कि कोई बच्चा जाए तो ये डॉक्यूमेंट्री ना चलती रहे विद सब टाइटल्स के साथ। तो महेश जी, ये मेरे मन में विचार आया, आप इसको देखिएगा, क्योंकि आवाज तो नहीं हो सकती हर वक्त, लेकिन ये सब टाइटल्स के साथ जो है, कोई भी लाइब्रेरी में कभी भी जा रहा है तो वो देख पाए। आज हम बात करते हैं लीडरशिप की। मैं थोड़ी सी बात इस पे बोलना चाहूंगा। हम ओबी के लोग हैं, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो लीडरशिप बड़ा अच्छे से पढ़ाते हैं। और लीडरशिप की बड़ी सारी डेफिनेशन, चाहे कीथ डेविस की हो, चाहे एसपी रॉबिन्स ने डिफाइन किया हो। लेकिन ऐसे ही मैं बैठा था तो एक हिंदी के हमारे साथी हैं, वो बता रहे थे कि भाई लीडरशिप तो वो होती है जो जोश से भर दे,
वो किसी किताब की डेफिनेशन देख के नहीं बोल रहे थे, वो ऐसा करने पे मजबूर कर दे कि जो आप नहीं करना चाहते हो उसके लिए भी आपके अंदर उत्साह भर जाए। फिर मैंने देखा कि हाँ, ऐसी डेफिनेशन तो इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स ने दी हुई है जो बात यही कहता है कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू स्टिमुलेट, टू इंस्पायर पीपल टू डू समथिंग दैट अदरवाइज यू विल नॉट डू। और वो व्यक्ति ने कभी पढ़ा नहीं। तो लीडरशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, और आर्मी में तो सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी, बड़ी सारी थियरीज हैं कि इनबॉर्न होते हैं लीडर या एक्वायर की जाती हैं। अब हम अगर भारत की लीडरशिप देखें तो एक समय था जब हम IC-814 हाईजैक कर लिया जाता था तो हम लेके पहुंच जाते थे कि ये हमारे भैया छोड़ दो। तो भारत एक देश ऐसा माना जाता था कि जो समझौते करता था। कहीं किसी ने कह दिया कि भाई अमेरिका से या बड़े देशों ने ऐसा कह दिया तो मान लिया, हम आवाज नहीं उठा पाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज भारत की स्थिति बहुत बदल गई है। एक कवि है हरिओम पवार जी, वो बड़ा, उनकी मुझे कविता सुनी, हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी एक प्रोग्राम में बताया, मुझे बड़ी अच्छी लगी और वो मैं आज दोहराना चाहूंगा कि लीडरशिप क्या होती है और कैसे भारत की एक स्थिति जो है आज नई दिखती है। तो वो कहते हैं कि भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये, नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। नई सदी का भारत है ये, 62 वाला दौर नहीं। सर ने 71 की लड़ाई लड़ी, उस टाइम भी कुछ दौर चलता था। आज कहते हैं कि हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। पहले अमेरिका या कुछ ऐसे देशों को ही दुनिया का दादा माना जाता था, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। अब क्या और क्या बदलाव आया है? हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। और क्या लगता है? 370 भी हट गया। एक अभी आपने सुना होगा कि बालाकोट स्ट्राइक हुई, पुलवामा पे अटैक हुआ, तो उसके जवाब में हमने दिया। तो पहले तो हम आतंकवादियों को परोस के ले जाते थे, आज हम उनके घर में घुस के मारते हैं। तो जब हम बालाकोट स्ट्राइक की बात करते हैं या पुलवामा अटैक की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि घर में घुसकर, उरी का बदला घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। उरी का बदला घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया और पुलवामा का बदला बालाकोट से देना सीख लिया। धन्यवाद। Thank you, sir, for those beautiful words of inspiration. You constantly motivate and guide us to do better. I would now like to request our Honorable Chief Guest, Lieutenant General V.K. Chaturvedi, to address the audience. The stage is all yours, sir. Professor Arun Kumar Khatri, Honorable Principal of this elite college, Air Commodore Kale, my distinguished colleague, Samir Khanna. Is it Khanna? Samir Bakshi. Distinguished members of the faculty, and most important, my dear children, students of the NSS, NCC, full of confidence, with sparkling eyes, who are going to make Bharat
द विकसित भारत। आज इस कॉलेज में आकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यहाँ का जो एक वातावरण है वो खुद अपने आप में आप सबका मनोबल बढ़ाता है। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। और जो हमारी संस्कृत और विरासत की परंपराएं हैं उनका पूरा यहाँ पे फॉलो अप होता है। मैं इम्प्रोवाइजेशन की बात करूंगा। आज मैं फौज का आदमी हूं। हम लोग को जब टास्क मिल जाता है तो वो टास्क पूरा होना है, चाहे जिस तरह से हो। अगर वायरलेस सेट काम नहीं कर रहा है तो डीआर पे जाएगा। डीआर पे नहीं, डीआर इज मोटरसाइकिल पे जो है उसको डीआर कहते हैं, डीआर डिस्पैच राइडर्स। और नहीं तो पैदल भाग के जाएगा जैसे मैराथन रनर उस वक्त हुआ है। लेकिन टास्क कंप्लीट होना चाहिए। उसका एक उदाहरण आज हमने यहाँ पर देखा। आपके माननीय प्रिंसिपल महोदय ने खुद दिखाया कि जब वो आवाज नहीं, साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन करके वो अपना उद्देश्य और जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया। दिस इज व्हाट। दूसरा जो हमारे रेजिमेंटल सॉन्ग्स होते हैं, ये सब बेसिकली उनका उद्देश्य होता है कि एक मार्गदर्शन करें और लोगों को प्रेरित करें सही काम करने के लिए। आज कुल गीत, एक तो नाम इटसेल्फ इस भारतीय संस्कार और परंपराओं की याद दिलाता है, और दूसरा जिस तरह से आप लोगों ने खड़े होकर उसके गाया है, ये बहुत, मैं समझता हूं, हर्षोल्लासित करने वाली बात है। ये जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, ये बहुत कुछ हमको सिखाती हैं। कुछ समय पहले एक कॉलेज में, यहाँ के हमारे यूनिवर्सिटी में एक जो हुआ वो दिल में छुआ हुआ है अभी तक। बहुत दुख हुआ था उस दिन मुझे। 2016 की शायद बात है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, कभी भूलूंगा नहीं उसको। और मैं समझता हूं उससे बहुत कुछ बदल गया है उस समय से। मैं जेएनयू में बहुत जाता रहता हूं और मैं नहीं समझता कि ये दोबारा रिपीट होगा। और इसको मेरे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं वो इंश्योर करेंगे। भारत हमको प्राणों से भी प्यारा है, तो इसको कभी हम झुकने नहीं देंगे। एक महान क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त का आज पुण्यतिथि है। एक नॉर्मल परिवार में पैदा हुए लियालपुर में, जो आपने अभी ये लव चित्र में, डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया। थोड़ी बहुत गांव में शिक्षा की, फिर डीएवी कॉलेज में जाकर पढ़ाई भी की, लेकिन फिर लाला लाजपत राय के साथ जुड़ गए और महान क्रांतिकारी बन के इस आज भी हम उनको याद करते हैं। उनका क्या 1900 एक साइमन कमीशन बनाया गया था कि भारत की राजनीतिक स्थिति को किस तरह से वो है आज, उसके बारे में वो रिपोर्ट देनी थी साइमन कमीशन ने। और उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था, सदस्य नहीं था उस साइमन कमीशन में। उसके विरोध में सारा आंदोलन हो रहा था। लाला लाजपत राय एक आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे। वो यही चाहते थे कि एक भारतीय को भी इस साइमन कमीशन में मेंबर होना चाहिए। लेकिन एक सुपरिंटेंडेंट पुलिस, ब्रिटिश अधिकारी मेजर मिस्टर स्कॉट, उन्होंने उन पे लाठियां बरसाई और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। यह चीज हमारे सरदार भगत सिंह को बहुत छू गई और उन्होंने कहा कि मैं इसका बदला लूंगा। यह बिल्कुल आतताई है, क्रूरता है हमारे एक राष्ट्र के नेता को, जिसका कोई निर्दोष था, वो केवल अपनी आवाज उठा रहा था, उसको उन्होंने मारा है। हम उसको मारेंगे। और उसी में उन्होंने
उसको मारने का जब प्रयास किया तो गलती से उसका असिस्टेंट एडिशनल एसपी सॉन्डर्स की डेथ हो गई। और उस डेथ के बाद उन्होंने कहा नहीं, अभी जो असली आदमी नहीं मारा गया है, तो इसलिए वो भाग गए कि हम जब तक नहीं अरेस्ट होंगे, क्योंकि उनको अरेस्ट डर नहीं था, वो तो बाद में आप सब जानते हैं ना, उनको मौत को डर था। उन्होंने कहा अभी असली आदमी नहीं मार पाए हैं, तो इसलिए भागे वो वहां से। और फिर बम कांड हुआ, उसमें हुआ, फिर पकड़े गए और अंत में उनको फांसी की सजा दी गई। 23 वर्ष का हमारा युवा भारत का राजगुरु सुखदेव के साथ भारत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर गया, और उसी ने वो चिंगारी जन जन में पैदा कर दी, जो कि अंत में हमको स्वतंत्रता मिलने 15 अगस्त 1947 में अंत हुआ उसका, चिंगारी का। तो ये जो ऐसे महान क्रांतिकारी, महान भारतवासी, उनसे हमको बहुत प्रेरणा लेनी है। आज आपके प्रिंसिपल साहब ने भी बहुत कुछ बताया, इनसे भी बहुत कुछ हमने सीखना है, और ये चीजें हमारे दिल में हमेशा बसनी चाहिए। मैं कुछ चीजों पे आज आपसे जरूर बात करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब बच्चे मेरे सामने हैं, उनको मैंने जरूर कुछ चीजों के बारे में जो मेरा अनुभव है अपने जीवन का, वो जरूर बताऊं। शहीद भगत सिंह की तरह ही 2 और युवा थे। भारत युवा राष्ट्र है और 65% हमारी जो जनसंख्या है वो 35 वर्ष से कम की है। और ये पूरा अमृतकाल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है, इस पूरे 25 वर्ष तक भारत विश्व में जितने भी बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं उन सब में सबसे युवा राष्ट्र रहेगा। तो इसीलिए इन 25 वर्षों का बहुत महत्व है। युवाओं का योगदान आज से नहीं, पुरातन काल से राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही अतुलनीय रहा है। 2 की बात करूंगा केवल, स्वामी विवेकानंद जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद जी एक विश्व से 38 वर्ष की उम्र में चले गए थे, और ऐसा कुछ करके चले गए कि आज भी उनके जीवन के ऊपर अध्ययन हो रहा है। आज भी उन्होंने जो लेख लिखे हैं उन पे लोग, और कि वो क्या कहना चाहते थे, रिसर्च हो रही है। उनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, उनकी किताबों के ऊपर रिसर्च होती है। और 1893 शिकागो में उन्होंने पार्लियामेंट ऑन रिलीजन, धर्म संसद में जो अपना भाषण दिया है और हिंदुत्व के बारे में जो बताया, वो आज भी लोग उस पे किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा हिंदुत्व एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जो सबको साथ लेकर चलने में सौहार्द, प्रेम, सद्भाव, केयरिंग एंड शेयरिंग के साथ उसमें विश्वास रखती है। वो ये नहीं, केयरिंग एंड शेयरिंग का आपको मैं उदाहरण दूं कि जब वैक्सीनेशन की, जब हमारा कोरोना पीरियड में भारत ने वैक्सीनेशन बना लिया था और भारतवासियों को भी लग रहा था, उनको भी जरूरत थी, बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत की, लेकिन तब भी भारत ने उन देशों का जिनके पास ऐसे साधन नहीं थे, जो नहीं कर पाते थे, उनके लोगों का भी ख्याल रखा और 78 कंट्रीज को ये वैक्सीन दी। वही वैक्सीन दी जो हमने हमारे देशवासियों के लिए लगाई गई। और इसके एवज में मैं आपको 1964-65 में सैनिक स्कूल में था उस वक्त, उसका जरा याद दिलाना चाहता हूं। भारत उस वक्त खाद्य सुरक्षा में बहुत अपूर्ण था, बहुत पीछे था। अन्न की बहुत कमी थी, खाद्यान्न की कमी थी। हमें अमेरिका ने अन्न दिया, गेहूं दिया, PL 480, आप सब याद रखिएगा, रॉटन व्हीट
सड़ा हुआ अन्न हमको दिया, मैंने भी खाया है उसको, और उस वक्त के जो लोग हैं उन्होंने भी खाया है, क्योंकि भारत में खाद्य सुरक्षा नहीं थी। लेकिन ये भारत के हमारे जन जन ने दिखा दिया कि आज भारत खाद्य सुरक्षा में पूरा परिपूर्ण है, ना कि भारतवासियों के लिए दूसरे देशों को भी देता है, और वही सड़ा हुआ गेहूं नहीं देता। ये भारत का सबसे बड़ी परंपरा है, भारत का स्ट्रेंथ है, शक्ति है। तो इस तरह से जब आप स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका करके उन्होंने जो भाषण दिया, आज भी अमेरिकन उसको याद करते हैं। ऐसे हमारे अध्यात्म के क्षेत्र के ऐसे महानुभाव और ऐसे युवा थे। दूसरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक संपन्न परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार में कटक में पैदा हुए। उनके फादर जानकी दास बोस बहुत अच्छे वकील थे, अच्छी शिक्षा ग्रहण की, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में गए, और उस वक्त की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जो आईएएस के पहले प्रीकर्सर थी, आईसीएस, उसमें कंपीट किया, पास हुए, 4th पोजीशन हासिल की। लेकिन जब जलियांवाला बाग हुआ, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने हमारे भारतवासियों पे, हमारे बुजुर्गों पे, हमारे भाई बहनों पे, हमारे बच्चों पर, निहत्तों निर्दोषों को उस 4 दीवारी के बीच में उन पे गोलियां चलाई, इन आतताइयों ने बर्बरता दिखाई, क्रूरता दिखाई, तब उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सरकार की नौकरी नहीं करूंगा जो हमारे भाई बहनों पे इस तरह की क्रूरता करता है। त्यागपत्र दे दिया, भारत आ गए, और एक ऐसी संस्था आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि कैप्टन मोहन सिंह ने स्थापित की थी और तकरीबन विलुप्त होने वाली थी उस वक्त, उसमें ऐसी जान डाल दी कि एकदम उनका मनोबल इतना बढ़ गया। और मोइरंग में, इम्फाल के करीब 60 किलोमीटर दूर एक जगह है, द माइटी ब्रिटिश आर्मी को उन्होंने पराजित किया। This was the Indian National Army, and this was the leadership of great Netaji Subhash Chandra Bose. They operated in the worst climatic conditions, most rugged and inhospitable terrain of the Northeast, जहां पे आज भी इंडियन आर्मी को भी दिक्कत होती है। And they had nothing. नेताजी के पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। आपको फेमस नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, याद होगा। This is भारत, and what a visionary he was. दूरदर्शिता की देखिए, in 1944 he raised a महिला बटालियन, कैप्टन लक्ष्मी सहगल उसका नेतृत्व कर रही थी। He knew, he was convinced कि भारत कभी भी बन नहीं सकता और यश और कीर्ति के सर्वोच्च पे, शिखर पे नहीं पहुंच सकता जब तक कि भारत की आधी आबादी उसके साथ नहीं होगी। एवरी जन जन ने भारत के निर्माण में योगदान देना है। फिर अगर मैं राष्ट्र प्रथम के बारे में बात करूंगा, जैसा आपके प्रिंसिपल साहब भी कह रहे थे, हर आर्मी यूनिट में आपने देखा होगा जब आप एंट्री करते हैं, नेशन फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, राष्ट्र प्रथम सदैव एवं सर्वदा, ये हमारा मूल मंत्र है। जब हित की बात आती है तो राष्ट्र हित सर्वोपरि है और उसके अलावा कुछ नहीं, ना मेरी फ्रेंडशिप, ना मेरे रिश्तेदार, कुछ भी नहीं, केवल राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। एग्जाम्पल, S-400 जब हम रशिया से खरीद रहे थे, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, अमेरिका हमने हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डाला, कहते हैं कि नहीं अब रशिया से मत खरीदिए, वो यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहा है, उस पर सैंक्शन लगानी है। क्लियरली द इंडियन गवर्नमेंट टोल्ड देम, हु आर यू, आप कौन होते हैं हमको बताने वाले कि हमें क्या चाहिए। वी विल बाय व्हाट वी नीड, वी नो व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, दिस इज व्हाट राष्ट्र हित इज ऑल अबाउट।
जब प्रेम की बात आती है तो राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। जब सम्मान की बात आती है तो राष्ट्र सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। जब गौरव की बात आती है तो राष्ट्र गौरव से बड़ा कोई गौरव नहीं है। जब सेवा की बात आती है तो राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भक्ति की बात आती है तब राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। लेट इट बी वेरी क्लियर, जब राष्ट्र की बात आती है तो हमारी जात पात, भाषा, खान पान, रीत रिवाज सब सेकेंडरी है, तब हमारा राष्ट्र प्रथम है और यही हमारा होना चाहिए। जो अभी मैडम गुप्ता बता रही थी, जो भरा नहीं है भावों से, ये बहुत, मैंने 6th और 5th और 6th में ये कविता पढ़ी है, कभी भूल नहीं पाता है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड लेट अस फॉलो दिस इन टोटो। हर शब्द इसका बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिकता वर्सेस परंपरा, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशंस। Modernity, which is novel, colloquial, we say we put on a different type of clothes, speak in a different accent, we become modern. नहीं, ये नहीं है। Modernity, आधुनिकता is only of मस्तिष्क, माइंड की है, ज्ञान की है, विवेक की है। You should be able to discuss with the best in the world on aerodynamics, satellite communication, artificial intelligence, meta, then you are modern. But when it comes to traditions, जो परंपराओं की बात आती है, वो हमारे अपने हैं, ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, ये हमारी पहचान है। इसको हमने कभी नहीं छोड़ना। हमारे रीत रिवाज, हमारे तीज त्योहार, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, और कहीं भी जाएं, अगर इंग्लैंड में भी हो और अमेरिका में भी हो, वी आर इन ऑस्ट्रेलिया, लेट अस फॉलो दैट। अपने फेस्टिवल्स को खूब जोर शोर से मनाइए। एंड जब आपके घर में कोई दूसरा विदेशी आता है, और अगर आप घर में लिट्टी चोखा खाते हैं, तो सत्तू खाते हैं, तो उसको भी परोसिए। यू विल बी रेस्पेक्टेड, लेट मी टेल यू। आपकी रेस्पेक्ट होगी, आपका आदर होगा, आपका सम्मान होगा कि हियर इज एन इंडियन हु टेक्स प्राइड इन व्हाट इज इंडियन। जो भारतीयता में प्राइड, गर्व करता है, उसका सम्मान होता है। सो दैट इज व्हाट। अनदर पॉइंट इज स्टेबल गवर्नमेंट। मैं किसी पॉलिटिकल उससे नहीं बोल रहा हूं, आई एम फौजी, एंड मैं केवल ये बोल रहा हूं, राष्ट्र हित में स्टेबल गवर्नमेंट की बहुत जरूरत है। वी हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। यू आर ऑल गोइंग टू वोट, वेयर एवर यू वांट टू वोट, इंश्योर दैट यू गिव द टीथ टू द गवर्नमेंट। उसको आप अच्छी तरह से मजबूती दें कि वो अच्छे राष्ट्र हित में निर्णय ले सके। स्ट्रॉन्ग लीडर्स, इसकी बात आपके प्रिंसिपल साहब ने भी कही है और मैं भी कोट करूंगा। स्ट्रॉन्ग लीडर्स आर द नीड ऑफ द आवर्स। बालाकोट स्ट्राइक करना एक आसान डिसीजन नहीं था। अच्छे अच्छे लीडर्स विश्व के इसमें थोड़ा घबरा जाते हैं और शायद इस तरह का एडिशन, लेकिन here was a prime minister who had full faith in his armed forces and who knew what he is doing, कि हमने दुश्मन के एरिया में, पाकिस्तान में 70 किलोमीटर अंदर जाके हमारे 20 एयरक्राफ्ट ने उनका टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किया और पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि भारत एक शक्तिशाली देश है। उस पे अगर आप गलत करने की कोशिश करोगे तो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट द न्यू भारत, जो नया इंडिया अभी अरुण कुमार जी ने जिसके बारे में बात की है। Anything could have happened. War could have broken out. It could have led to some aircraft being shot down by Pakistan Air Defense. Some pilots would have been captured. कोई डेथ हो जाती, लेकिन उसके बावजूद पूरी सेनाओं पर, सशस्त्र सेनाओं के ऊपर विश्वास करके ऐसा डिसीजन लेना बिरले ही कर सकते हैं और एक मजबूत नेता कर सकता है। ये बहुत जरूरी है and we have to elect them. This is equal to what Entebbe, अगर none of you were born, I think this is 1976 I am talking about. Uganda
hijacked an aircraft of Israel with 102 passengers, took them to Uganda. They wanted release of 13 to 14 terrorists from Israel. And Israel was about to give up. 6-7 days negotiations continued. And they were about to say, give up कि no, हम return कर देते हैं क्योंकि 102 हमारे इजरायली वहां फंसे हुए. The then defense minister of Israel said, no, nothing doing. We are not going to do this. Because आज अगर हमने ये कर दिया तो कल हमसे कुछ और डिमांड होगी, परसों कुछ और होगी और हम एक कमजोर नेशन कहलाएंगे. They launched a military operation. A raid was launched, led by Lieutenant Colonel Netanyahu, the present Prime Minister's elder brother. And look at the results. जब आप इस तरह के साहसिक निर्णय लेते हैं तो परिणाम भी अद्भुत होते हैं. They destroyed 60 to 65% of the Ugandan Air Force, got each and every 102 people back to Israel, and the only casualty was the leader, Lieutenant Colonel Netanyahu. This is what the dynamic leader, the strong leaders are meant to do. And results will always be astounding. Strong armed forces are required for peace. You will all be surprised that armed forces are supposed to fight war. But let me tell you, a strong and a modern armed forces will ensure peace. They are a guarantee for peace. Armed forces are meant to prevent war, not to fight war. अगर आप स्ट्रांग होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ. अभी आप अमेरिका को देख ले, पूरा नेबरहुड अमेरिका का शांत है. जहां चाहता है वहां अशांति कर देता है. मिडिल ईस्ट में अशांति कर देता है, रशिया यूक्रेन में अशांति हो जाती है, वियतनाम में, ताइवान में अशांति कर देता है. तो दिस इज व्हाट स्ट्रांग आर्म फोर्सेस आर इन नीड. वी कैन नॉट डू अवे विदाउट देम. एंड माय लास्ट बिफोर आई क्लोज, भारत ज्ञानवीरों का देश है. नॉलेज, विजडम हैज बीन आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. राइट फ्रॉम पुरातन काल, सुश्रुत, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, मैत्रेय, पातंजलि, कालिदास, गार्गी, एंड अगर आप आगे आए तो चाणक्य, महर्षि वाल्मीकि, और अभी आप देखिए तो सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, जेसी बोस, एंड आज के लेटेस्ट सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, पराग अग्रवाल, अजय बांगा. They are leading the best, the most important companies of the world, and they are all Indians. So this is what our gain knowledge is our greatest strength. अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो भारत ज्ञान और विजडम में विश्व गुरु बनेगा. भारत विश्व को लीड करेगा, भारत विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा ज्ञान के उसमें. और इसको आज जहां भी आप जाइए, सारे भारतीय लीडिंग कंपनीज को लीड कर रहे हैं. इवन नासा हैज मोर इंडियन साइंटिस्ट, जापान हैज टू मेनी साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया. भारत के परिश्रम इसकी देखिए. 1917 we went as bonded labor, contract labor to these small countries, Suriname, Fiji, Mauritius, Caribbeans, and look at the parishram. And they went with a gutka and a kamandal of Ganga Jal. They all led. वो सब उन कंट्रीज में उनके लीडरशिप उन्होंने रोल अदा किए. और आज भारत सब जगह, आज तो भारत अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन की है, इंग्लैंड में भी प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन का है. सो दिस इज हमारी जो प्रतिभा है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा विवेक है, विजडम है, इसको हमने बना के और सजा के रखना है. भारत दानवीरों की धरती है. यहाँ पे आपके फंड्स की कभी कमी नहीं होगी. आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आपकी जो योजना है वो राष्ट्र हित में और समाज हित में होनी चाहिए. आपके पास कभी कमी नहीं होगी पैसे की. ये दानवीर दधीच की धरती है, ये महाराजा हरिश्चंद्र की धरती है, ये दानवीर कर्ण की धरती है, एकलव्य की धरती है, सती सावित्री की धरती है. और अंत में भारत शूरवीरों की धरती है.
ज्ञान, दान एंड शौर्य, ये 3 हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। पुरातन काल से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, भगवान श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, और फिर आप पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी, राणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, मां चिन्नम्मा, केशव देव राय, और फिर मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, वो 17 साल के थे जब उनको उनके फांसी की सजा देने के लिए उनको वेट करना पड़ा। इस तरह से, और फिर स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1947 के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा, शैतान सिंह, जदुराज सिंह, दान सिंह थापा, मेजर कर्नल दान सिंह थापा, अरुण क्षेत्रपाल, एनजेसी नायर, निर्मलजीत सिंह सेखों, और अभी कारगिल में विक्रम बत्रा, द फेम ऑफ ये दिल मांगे मोर, मनोज पांडे, जिसने कहा कि मां को पत्र लिखा था कि मां, या तो मैं टोलोलिंग पे तिरंगा फहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। संजय कुमार, योगेंद्र यादव, आपकी जवान थक जाएगी लेकिन वीरों के नाम नहीं कम पड़ेंगे। और आज तक भारत में किसी मां ने ये नहीं कहा कि राष्ट्र ने मेरे बच्चे को मरवा दिया, या किसी पत्नी ने नहीं कहा कि मेरे पति को मरवा दिया, ना किसी बेटी ने, ना किसी बेटे ने। सब ने उस जो बलिदान है उसका सम्मान किया है, उस पर गर्व किया है। ये भारत है, ये भारत की परंपरा है कि यहाँ पे देश पे सर्वोच्च न्यौछावर करने वालों का सदैव सम्मान होता है। मैं अंत में एक गुरु गोविंद सिंह जी का, आप सबको याद होगा, मैं अपनी रेजिमेंट में बहुत, जब भी कहीं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज या हम लोग किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जाते थे, देश बावर मोए है शुभ कर्मंते कब ना टरूं, जा लड़ूं अरसों से अरसों, जब निश्चय करो अपनी जीत करूं। दिस इज व्हाट, शुभ कर्मों से करने में कभी भी डरना नहीं है। शुभ कर्मों से, अच्छे कर्मों के, राष्ट्र हित में, समाज हित में, परिवार के लिए, सेल्फ लास्ट, इन सब के लिए कार्य करने में कभी नहीं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये बहुत बड़ी चीज है। अंत में मैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और गौरव, रितिम, प्रोफेसर उपाध्याय, आप सबका और प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, बात करने का आप सबसे। और मैं आप सबको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारे बच्चे खूब ज्ञान अर्जित करें, और ज्ञान अर्जित करने के बाद राष्ट्र के अच्छे नागरिक बने, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने, अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर, अच्छे प्रोफेसर्स बने, और सबसे महत्वपूर्ण जो फौज में जाना चाहते हैं, अच्छे फौज के अधिकारी बने। ऑल द वेरी बेस्ट। एक मैं, बिफोर आई लीव, आई मस्ट गिव यू वन पोएम जो कि आप सबको, उठो धरा के वीर सपूतों, धरा यू ऑल नो पृथ्वी, उठो धरा के वीर सपूतों, सपूतों इज ए कॉमन जेंडर, मेरी ये बेटियां यहाँ पर बहुत हैं, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, भारत के जन जन में नव स्फूर्त, नव प्राण भरो। ये भारत हमको प्राणों से भी प्यारा है। इसकी रक्षा करने के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए, यश और कीर्ति के शिखर पे ले जाने के लिए हम पूरी जान और परिश्रम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for those invigorating words of wisdom. You have truly energized our hearts and minds. I would now like to invite our honorable guest of honor, Air Commodore Shri Karthike Kale, AVSM, to enlighten the gathering.
Thank you, beta, for saying enlighten the gathering. I don't think I can do that, but I will definitely share my experiences with you. That's what I'm here for. And thank you, Arunji, for calling me here and inviting me for this function. Okay, today I thought that I'm going to start by saying that, my relationship with the three revolutionaries actually goes back a long way, in the sense that my best friends, my school classmates, Nana was Sukhdevji's brother. Okay, so I saw that family up and first time. I met his Nana. I used to call him Nana too, and I heard all those stories from him when I was a small child. And they were staying in South Extension. Okay. That's where they were staying. And now, of course, I don't know where they are. It's been a long time. So his stories, his experiences, his fervor for his own brother. He wrote a book on Sukhdev also. And you know that in the bomb blast, the case was known as Sukhdev versus the Union of India, okay? And that is because he was supposedly the brain behind the whole show. That does not take down or does not disrespect the other people who did what they did, okay? And I think that what we must remember is that Sardar Bhagat Singh's greatest contribution to the fact that he was just 23 years old when he made the supreme sacrifice. That is something that still, gives me that goosebumps. Just talking about it, that his sacrifice came at 23 years of age. So I think that is what this college has, the college is aptly called Shaheed Bhagat Singh College because it trains, it mentors students. And वो जो mentoring जो students की है, वो इस बात पे है कि there was a 23-year-old boy who changed the direction of the entire freedom struggle of this country. And today, 93 years later, he is still remembered. And there are old people like me and older people and more experienced people who are paying him homage. And that is a legacy that is very difficult to achieve. And I think that is what the youngsters must remember. That sacrifice is the first and biggest quality of the youth. And that must always be. Okay. So now, apart from the emotional stuff, now let's get on to something more practical, which I always like talking about. So I'm going to talk to you about leadership. Everybody has read a lot about leadership, but I like talking about it because in the military, we have a totally different style of leadership. It is not civilian style of leadership. It is the military style of leadership. But the essential factors, यानी जो common चीजें हैं, वो सब बराबर ही हैं. ऐसा नहीं है कि leadership in military is very different from the civil street. Okay, it's almost similar, but there are essential differences. And I will just, talk about what are the essential traits of a military leader. Let us see whether we can find some similar traits in the civil street also. Okay, I have now been a civilian for the last 3 years, so I will say that I have met plenty of leaders. Okay, and we have got great leaders in our political sphere, in our industry, in commerce, in academics, in almost every sphere that you name. And today we have great sportsmen. There was a time when I was a child, I used to wonder because I was a sportsman. और मैं यही सोचता था यार कोई खेलता ही नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं है. But the last 10-15 years have changed my entire perception because I see now a new generation. And again, this is the young people of India. Today the most competent athlete in the world is who? And I am very proud to say that he's an Indian Army soldier. Okay, so the Indian Army has groomed him to be what he is. It needs an organizational, but the fact remains that he had the spark, he had the will, he had the drive. The organization just allowed him to carry on with it. So if you have the spark, if you have the will, if you have the drive, just stay true to it. Okay, leadership can be at any level. He is a great leader. He has become a world leader, whereas we have all got stuck. Me as an air commodore in a small sphere, but he has become a great world leader because he believed in himself and did what is right. Okay, so that is the first quality of being a great leader or a great leadership, is that you have to believe in yourself. Without that belief, you are a nobody. Okay, so I'm addressing only the youngsters. Please, all the oldies or the senior lot, just just listen to my dialoguing or whatever it is, because I want to address only the children here. Okay. They're all young. Of course, sir. Of course, young at heart is always there, sir. So I'm going to start, by saying the first thing that comes to my mind is discipline. फौज के में discipline के अलावा कुछ नहीं. Everybody says discipline, discipline, discipline. But what does discipline really mean, and how does it apply in civil life? I look at it as two aspects. दो चीजें हैं discipline में. एक mental है और एक social है. What is social discipline? जो हम society में आपस में करते हैं. जैसे traffic red light पर रुकना, किसी elderly lady को है उसके लिए seat देना. This is discipline in a social context. But the first part is discipline of your own self. Okay, that is where it all starts from. तो संयम,
Atma Sanyam Bharatna. That is the first and foremost. And all yogis, whether you look at Swami Vivekananda, or you look at even today's modern gurus like Sadguru and all, they will all talk of only one thing. That is self-control or Atma Sanyam, discipline. That is inner discipline. फौज उसको discipline बोलती है, बाहर लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं. जो गुरु हैं वो अलग अलग नामों से उसको संबोधित करते हैं, परंतु उसका मतलब एक ही है. उसका मतलब यही है. So it starts from within you. That discipline will lead to confidence, and that is how the whole thing starts. Okay. So the first factor is to maintain your discipline within yourself. If you have decided to do something, do it. Okay. And social discipline we'll talk about when I come to the end of the talk. The second part is professional knowledge. Without professional knowledge, there is no leadership. You can just forget about it. Okay. You can keep thinking that मैं बहुत अच्छा leader हूँ because मैं आगे दौड़ रहा हूँ and everybody else is following. But the moment you stop, they will overtake you and go ahead. So you have, whenever you are a leader, you have to have followers. Without followers, you really can't be a leader. And leadership role जो है वो हर जगह है लाइफ में. It is not that कि आप अगर एक ग्रुप को लीड नहीं कर रहे हैं या आप ग्रुप लीडर नहीं बने तो आज मैं लीडर नहीं हूँ. It's not like that. In life, when your elder brother held your hand and led you down the stairs, your brother led you. He was the leader. It is intrinsic in our life to be leaders. In all our life. Your mother is the leader when she's trying to feed all the children together. We were 4 brothers. My mother had a very tough time, okay, trying to put us all together and feed us. But she was a great leader. She managed it. And that is why today we are at this age and stage. So leadership ki jo quality hai, that is, don't try and look at it only in this grand perspective of world leaders, world beaters. It is there within you. And it is exhibited every moment of the day. Har roz, har pal, aapki wo leadership quality dikhti hai. Okay. Now the thing is to recognize it and accept that there is quality in me. Okay, all this talk about, academic talk about, okay, academic talk about it is inbuilt, it is not inbuilt. This is all theory. Practically, it is there in you. It is exhibited every day. You just need to recognize it and then see कि तुम किस level के leader हो. If you have self-control, you will become a better and a greater leader. Obviously, professional knowledge is mandatory. So please study hard, work hard. Look at your, whatever you're doing, you should have excellence in that. That is the first and foremost requirement from a leadership. Okay. There is no point in, alpha, beta, Charlie, just say, Abhi, I was hearing somebody's talk a few days back, and he said that alpha, beta, Charlie were the grades that were given. And he came a poor Charlie. A poor Charlie will not really influence people to become alphas. It doesn't happen like that. Okay, so try and attain professional competence in whatever you do. It is not necessary that what you are doing today needs to be your sphere of leadership. That is another very important aspect. Life will make you leaders in various other spheres. Just because today I was, once upon a time I was doing Ramjas graduation, so I didn't want to lead my class and become the class representative and start doing dharna there. That was not my job. Okay, I did something else. I focused on something else, excelled in something else, and that became my life. So that's the way it is. You have to choose what you want to do it excellently, get your professional knowledge up to the mark in that, and then probably that will result in a great thing. It may come late. That's another warning. It may come late. Some people get it early, some people get it late. It's okay. It doesn't matter. If you got a life of 100 years, what do 5 or 6 years make a difference? They don't make a difference at all. Okay. So that is it. So be professionally very, very competent. That's the point. Then is decision making. And decision making only comes if you have knowledge. If you don't have knowledge, then you can't take a decision. If I am to say, okay, 2 plus 2 is what, and you don't know it is 4, then you can keep scratching your head, but you will never come to 4. The reason is that a decision or anything that is done is taken on the basis of knowledge. So please gain the knowledge, then take the right decisions. And right decision is what? Right decision is at that suits the situation. There are real life situations. Okay, I'm not, again, I like saying, I don't like talking theory. I'm talking practical life. In life, there are various decisions to be taken. Ye DTC ki bus pakdo ki bhi, agli bus kab aayegi 20 minutes. This is decision making. Please be quick about it. Don't keep waiting there, daydreaming while the buses pass you by. And then you find that the bus you caught, is now, you're reaching the exam hall late or something else is happening. So the aim is to focus, get the timing right, take the decision to do whatever you're doing at that time. And that helps you take larger decisions in life. If you're happy with your decision making, you will gain confidence and you will take larger decisions in life, whatever they are. And I'm not saying all decisions have to be right. There is always a certain rate of failure.
Okay, as a soldier, I took many decisions. Some of them turned out to be absolutely wrong. Okay, but I learned from them and moved on. So that the percentage of bad decisions kept reducing over a period of time. And that is what life will show you. If you start early by noting what you're doing, then you're not going to end up like me, at a later stage being a gawach and roaming around. Okay, so do that. Decision making के साथ obviously comes responsibility and accountability. ये हमेशा याद रखना. So be ready to accept that responsibility for the decision you have taken. That is what is character all about. So discipline हो गया, professional knowledge हो गया, उससे decision हो गया, and then उससे बात आ रही है character पे. Character क्या हुआ? The moral strength within you, the moral fiber within you. If you have taken a decision, so what if it has gone wrong? Take responsibility, take accountability. Try and set it right. It doesn't matter. Okay? As General Manekshaw in one of his lectures said, that commission is better than omission. There is no greater sin than omission. Not taking a decision. Of course, once upon a time, there was a prime minister who was famous for not taking decisions. But the point is that not taking a decision is the worst thing that a leader can do. So if you think you're a leader, if you want to become a leader, if the desire is in you, you feel that you're good, then take decisions. And take accountability, responsibility for those decisions and stick to them. If they are wrong, accept that they're wrong. Learn and move on. No crying over spilt milk. Doesn't work. Okay? Then is, of course, the point of justice and impartiality. That is what the whole thing comes to. Honesty and integrity. Again, a point of character. All these things will work as long as you're honest to yourself. I'm not talking about honesty means to be honest with others. That, if somebody asks you, why are you late? Then you say, no, sir, actually, मेरा जूते का लेस निकलने नहीं था. मैं उसको धीरे-धीरे बांध रहा था. फिर उसके बाद मैंने ऐसा किया. So that's not the storytelling is not the aim. The aim here is to just say that, okay, honesty means that your honesty to yourself. You know you had to reach in time. You were late. That guilt will come on your face. That's good enough. It is all about learning how to be a better person yourself. Leadership is all intrinsic. It is not external. A lot of people think it's external, but I started in the beginning. It's intrinsic. That's why even a javelin thrower who's a world leader is a world leader. Whereas me, a brigadier equivalent officer, is, just an individual. So there is a difference. And please remember this difference. So be him. Then, of course, you come to moral and physical courage, which is mandatory. Okay, physical courage in the sense that military requires physical courage, but life requires moral courage more than physical courage. Physical courage, you may get a chance once in maybe 1,000 times when something's happened, you may get a chance to do something about it. But moral courage, you'll get a chance to do every day, every minute of your life. That dukandar who gives you 10 rupees extra because he's too busy looking at other people, that returning of that money, that is moral courage. That helping that old lady because she's carrying too much of weight and you're going your way and you're getting late, but you still stop and pick up her luggage and say, "Nahi, ma'am, main aapko chhod deta hu." That is moral courage. Okay? So there are lots of varieties of moral courage that come every day in life. Please look at it the right way and develop that moral courage. Physical courage, I'm sure if you have the moral courage, when the chance comes to do a physical act of courage, you will not shy away. You will jump. You will jump and do it, and then you will be on top of that elephant on the Republic Day. I look at those children and I feel very proud. Okay. Life gives you an opportunity. Those children got an opportunity. They jumped at it. It is an amazing thing. Amazing thing. These things don't happen normally to everybody. Okay. So we must respect those kids. And if we get a chance, we must be ready to take on that chance of physical courage. Never ever shy away from physical courage. Okay. Then is loyalty. Loyalty to the people around you, loyalty to yourself, loyalty to the task that you're doing. Okay. It's a big thing. It's mostly, again, a character deal. So I'm not going to talk much about it. I think you will develop it as you keep going up in life. And finally, it is, leadership role mein kya hota hai na? Everybody shoves the responsibility onto you because you're taking the decision. And then everybody sits on their backsides and says, I'm not going to do anything about it. But are you that kind of a leader? A leader also has to get a task done. Okay. So the task can be done either by personal example, as your principal did, or it can be done by management. Okay, so management, everybody keeps asking me this question, what do you rate higher? Management is a part of leadership, or leadership is a part of management. So my answer is very clear to you. Okay, management is just one small subset of managing men and material or getting a task done as a part of leadership. But leadership is much more beyond that. Okay, and finally, I come back to discipline, which is social discipline. As long as we are in a society
As long as we are in a society, we should have social discipline. That is the most important thing. So social discipline is reflected, an external reflection of your inner discipline. That is what it is. That's all. Okay, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे कम कुछ नहीं है. If we follow the 5-6 steps or whatever it is, just look at it inside. So finally, it is all inner growth, you know. I don't have a beard, and neither am I wearing Sadhguru's robes, but Sadhguru says quite, you know, a few facts. And one of the facts is it's all inner engineering. Inner engineering, not in Sadhguru style by paying a huge amount, but inner engineering, just looking inside and realizing what is right and right for you and doing it. What is right for the society. And I'm sure if we do what is right for the society, then you will come to the great military value that General Chaturvedi just told you. Everything for the nation. This society is a part of our nation. It's a microcosm. It's our living nation. This room is a living nation. You know, you cannot say that this is not nation, that is nation. There's nothing like nation except the people who are in the nation. So unless and until we are a part of it, we develop that kind of a feeling, we are going to end up only as, you know, just people meeting each other and just brushing each other off. But if you have to work as a group, as a social, you know, life, as an organism, as a nation state, you know, again, a nation state is a legal definition. Okay, I'm not getting into that. India is a civilizational state. I have always maintained, and there's a huge difference between a nation state and a civilizational state. But still, whatever your concept of state is, whatever your concept is, understand that without working for each other in the society, all those given points actually make no meaning. They don't affect anybody else but you. If you improve, I'm sure the world will too. So that's my message to everybody. Okay, and thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. I must say that your address seemed to me quite Socratic for one reason, because the Greek philosopher Socrates would do something very much similar to what you did, which is begin conversations by doubting if he can teach new insights or offer something new, and end up offering profound insights on everything that he was talking about. So thank you so much for those wonderful words of wisdom and encouragement. Now, I would request the convener function committee, Dr. Neha Nanwal, to extend a formal vote of thanks for today. Thank you, Gaurav. Chief Guest, Sir, Lieutenant General Vishnukant Chaturvedi, Sir. Guest of Honor, Air Commodore Kartike Kale, Sir. Special Guest, Colonel Sameer Bakshi, Sir. NCC Cadets, NSS Student, Volunteers, Technical Team, Organizing Team, Rajiv, Sir, Audiophile Teams, and esteemed member of Shaheed Bhagat Singh family. अमीन साहब ने कहा है, खून शहीदे ए वतन का रंग लाकर ही रहा, खून शहीदे ए वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशां हिंदुस्तान आजाद है. On this solemn occasion of Shaheedi Diwas, I stand before you to express our heartfelt gratitude. We deeply indebted to our chief guest, Lieutenant Colonel Vishnukant Chaturvedi, sir, for sharing his valuable insights and inspiring words. We are also honored by the presence and words of our guest of honor, Air Commodore Kartike Kale, sir. Special thanks to Colonel Sameer, sir, for embracing the event. A sincere thanks to our esteemed principal, sir, for always having our back, no matter what, and supporting us in making this event a success. Our immense appreciation goes to dedicated NCC cadets, NSS students, volunteers, organizing team, and those who tireless effort ensured smooth conduct of this program. We applaud the performance by our student, that is audiophile, who enriched the occasion with their talent and dedication. Finally, a warm thank you to one and all present for joining us today and paying your tribute to our martyrs. Their sacrifice will forever guide us. Thank you. Bharat Mata ki Jai.
Thank you, Dr. Neha. I request the audience to kindly stand for the national anthem. Can we start? गणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। Thank you, everyone, for joining us today, and thank you for your patience. Just 1 second. One announcement is there. Okay. Just hand over the. I would now like to hand over the mic to Dr. Amrita Bajaj, President, Staff Association. Can we all settle again just for 5 minutes? I know all my teachers are looking forward to some beautiful time in terms of Holy Milan. So here we've got the time to begin with. तो एक बहुत अच्छा शहीदी दिवस का प्रोग्राम अभी हम सब लोगों ने मनाया, इतने अच्छे स्टीम गेस्ट हमारे साथ हैं और उसके साथ साथ एक अच्छा फेस्टिवल भी इज जस्ट ऑन द कॉर्नर एंड दैट्स नन अदर देन होली। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे वैसे तो सर अगर मैं उन्हें हमारे बड़े कहूंगी तो बुरा मान जाएंगे क्योंकि अभी उन्होंने कहा दे ऑल आर यंग, आई एडमिट दैट सर, बट हम आपको बड़ा समझ के आज खुश हैं कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं रेणु मैम जो हमारी सीनियर टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तिलक के साथ हमारे प्रिंसिपल सर और सारे गेस्ट का स्वागत करें। और चंदन का तिलक है क्योंकि अभी प्रॉपर होली कलर्स यहाँ पे रूम में अलाउड नहीं है, सो वी वर्क चंदन और ये हमारे कल्चर से काफी वो भी है मिक्स। मैं रमन सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रेणु मैम के साथ आके प्लीज ये सेरेमनी को करें। और हम सब अच्छी सी तालियां तो बजा ही सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे कल्चर का पार्ट है एक दूसरे को तिलक लगाना। रमन सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी का मुंह मीठा को कराए। होली के पकवान जिसे गुजिया के नाम से जाना जाता है जिसकी अपनी एक अलग वो है परंपरा। अब क्योंकि इस कमरे में इवनिंग का प्रोग्राम होना है तो हम सब चलते हैं संध्या वाटिका में जहां अच्छे से स्नैक्स भी आपका इंतजार कर रहे हैं और अपनी होली हम वहां खेलते हैं। तो यू ऑल आर कॉर्डली इनवाइटेड टू संध्या वाटिका फॉर having the extended celebration of Holy Milan. Happy Holi to all of you. Thank you.